Hi guys, welcome back to my channel। मैं हूँ शालिनी एंड यू आर वाचिंग जस्ट बीइंग लीगल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज में आए थे। हम करेंगे 2014 से लेके 2023 तक के पेपर्स को डिस्कस विद एक्सप्लेनेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइज, जो हमारा 2023 का पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विद रिस्पेक्ट टू एस्टॉपल विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब देखिए इनकरेक्ट वाले कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज एस्टॉपल एम्स टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड सिक्योर जस्टिस बिटवीन द पार्टीज बाय प्रमोटिंग ऑनेस्टी एंड गुड फेथ। ये तो बिल्कुल सही है। एस्टॉपल इज अ रूल ऑफ एविडेंस, ये भी करेक्ट है, ठीक है। एस्टॉपल कहाँ गिवन है हमारा 115 में, ओके। Estoppel is applicable against the statute. No, that is incorrect. ठीक है, against the statute नहीं है estoppel. D, all is correct. All are correct. ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो incorrect answer जो है वो है C. Next question, with respect to 165 of Indian Evidence Act, which of the following is incorrect? 165 क्या बोलता है? Judges power to put questions or order production or of the parties about any fact relevant or irrelevant, ओके। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो है द जज में टू डिस्कवर और ऑब्टेन प्रॉपर प्रूफ ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स आस्क एनी क्वेश्चन ही प्लीजेस। ये तो करेक्ट है, ठीक है। सच क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड टू एनी विटनेस और पार्टीज अबाउट एनी फैक्ट, ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट क्या है? सी, द क्वेश्चन आस्क्ड मस्ट बी रेलेवेंट क्वेश्चंस ओनली। जी नहीं, हमारे 165 में ये क्लियरली गिवन है कि इररेलेवेंट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं बाय द जज, ओके। डी क्या ऑप्शन दिया? नीदर द पार्टीज नॉर देयर एजेंट्स शैल बी एंटाइटल्ड टू मेक एनी ऑब्जेक्शन टू एनी सच क्वेश्चन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस क्या होते हैं? सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस वो होते हैं जो डायरेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, जो कि डायरेक्ट नहीं होते हैं, यानी कि आई विटनेस जो है वो एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है जो आपको सिचुएशन के कोई भी ऑफेंस हुआ है उसके आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं उनको दर्शाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पूछा गया है ना। तो द सर्कमस्टेंसेस विच from which the inference is sought to be drawn must be cogently and firmly established. This is correct. Obviously, circumstantial evidence को firmly establish करना पड़ता है, ठीक है। So, B क्या बात कर रहे हैं? Those circumstances should be of definite tendency. Correct, ठीक है, definite होना चाहिए वो। C क्या बोल रहा है? The circumstances must be unerringly pointing towards the guilt and innocence of the accused. No, this is incorrect, ठीक है। It is not important कि गिल्ट और इनोसेंस को उसको इट शुड बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स इट, ठीक है। डी क्या बोल रहा है? द सर्कमस्टेंसेस टेकन क्यूमुलेटिवली शुड form a chain so complete that there is no escape from the conclusion within all human probability the crime was committed by the accused and no one else. Yes, this is correct, ठीक है। The chain of circumstances should be complete. ये कहाँ पर गिवन है? हमारे सेक्शन 6 से शुरू होता है। रेस्ट जेस्टे का जो प्रिंसिपल है वो यही बताता है कि द चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस शुड बी सो प्रोबेबल कि इट शुड बी कंप्लीट, ठीक है। 32 क्वेश्चन क्या था 2023 के पेपर का? द डिफेंस काउंसिल इंटेंड्स to cross-examine and contradict the person who lodged the first information report, ठीक है, before the police and who is called as a witness. The defense can do so only after showing the contents of the FIR. Without showing the contents of the FIR, it's the judge's sole discretion to disclose the content of the FIR. Oral narration of the contents are sufficient, ठीक है। So यहाँ पर क्या बात हो रही है कि अगर क्रॉस एग्जामिनेशन करनी है डिफेंस काउंसिल को तो उसके बेस वहां पर कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट जो हैं उनको दिखाना जरूरी है विटनेस को, ठीक है, क्योंकि उसको पता तो होना चाहिए ना कि किस बेसिस पे उससे पूछा जा रहा है, क्या एलिगेशंस लगाई गई हैं, क्या है मुद्दा आफ्टर ऑल, ठीक है। नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब्जेक्ट टू द रूल ऑफ रेलेवेंसी, ठीक है। क्योंकि
देखो क्रॉस एग्जामिनेशन में इररेलेवेंट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनेशन इन चीफ में अप्लाई होता है, ठीक है। रेलेवेंसी का रूल री एग्जामिनेशन में अप्लाई होता है, एक्सपर्ट ओपिनियन में होता है, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग केस लॉ ऑन प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। इसका आंसर है ए, राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1954। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेलेवेंट अंडर सेक्शन 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, नॉलेज, इलविल, गुड कैरेक्टर, गुडविल एंड कैरेक्टर। सो कैरेक्टर इज नॉट, ठीक है, रेलेवेंट। नॉलेज, इलविल और गुडविल तो दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड एज रेलेवेंट फैक्ट अंडर सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। मोटिव दिया गया है, प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट दिया गया है, ठीक है, प्रेपरेशन दिया गया है, कॉज एंड इफेक्ट जो है इट इज नॉट कवर्ड। कॉज एंड इफेक्ट कहाँ पर दिया गया है, कॉज एंड इफेक्ट दिया गया है सेक्शन 7 में, ओके। So now our next question is which of the following provisions of Indian Evidence Act would cover the test identification parade conducted by the police? So इसका करेक्ट आंसर है 9 में दिया गया है TIP। इसको हम पढ़ेंगे CRPC के सेक्शन 54A के साथ, ठीक है, क्योंकि वहां पर भी हमें टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड गिवन है। सेक्शन 8 में गिवन है मोटिव, प्रेपरेशन, प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट। 9 में है फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलेवेंट फैक्ट्स। 10 में हमारे है थिंग्स सेड और डन बाय द कॉन्स्पिरेटर, ठीक है, इन कॉमन डिजाइन। और 11 में है आपका प्ली ऑफ एलिबाई, यानी कि वेयर व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट, ओके। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज द सुप्रीम कोर्ट परमिट द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल बी देसाई 2003। नेक्स्ट है एक्यूज्ड एक्स after committing murder comes to his wife and discloses to her about the said murder. This communication is B, relevant but inadmissible, okay. So guys next question है हमारा husband and wife are competent witnesses against each other in civil and criminal both, okay. Which of the following sections of Indian Evidence Act propounds that admissions are not conclusive proof of the matters admitted? It is section 31, ठीक है। section 31 हमारा क्या बोलता है, section 31 states, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है बट यहाँ section 31 states admissions not conclusive proof but may stop, ठीक है। now next is choose the correct alternative for assertion and reason. assertion क्या है हमारा, a lunatic is not incompetent to testify, या दिस इज करेक्ट, ठीक है। रीजन क्या है, all persons are competent to testify unless prevented from understanding the questions or cannot give rational answers to the questions due to tender age, extremely old age or disease etc. Yeah, this is also correct, ठीक है। both A and R true and R is the correct explanation of A. नेक्स्ट इज 43 क्वेश्चन। सो गाइस ये वाला क्वेश्चन जो है इसको डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि देखिए पढ़ते हैं। A is on trial for murder of C. There is evidence to show that C was murdered by A and B, and during the trial B said A and I murdered C. This statement is relevant and admissible against A only, relevant and admissible against A and B both, not relevant at all, inadmissible. So guys ये हमारी illustration है जो given है, ठीक है। तो जो इलस्ट्रेशन बी है ये आपको सेक्शन में बताती हूँ। जो इलस्ट्रेशन बी है वो ये बता रही है कि ए इज ऑन ट्रायल फॉर द मर्डर ऑफ सी, ठीक है। यहाँ जो इलस्ट्रेशन है उसमें बताया है कि ए इज ऑन हिज ट्रायल, ठीक है, ए इज ऑन हिज ट्रायल। अब ए इज ऑन ट्रायल यहाँ पे सिर्फ लिखा है, तो दिस विल बिकम दिस क्वेश्चन बिकम्स क्या कहते हैं रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पर हमें पता नहीं है किसका ट्रायल चल रहा है। ए इज ऑन ट्रायल फॉर द मर्डर ऑफ सी, देयर इज एविडेंस टू शो दैट सी वाज मर्डर्ड बाय ए। यहाँ पर क्या है, देयर इज एविडेंस टू शो दैट सी वाज मर्डर्ड बाय ए एंड बी एंड दैट बी सेड ए एंड आई मर्डर्ड सी, सो दिस बिकम्स रेलेवेंट, ओके। यहाँ पर
लेकिन जो हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है दैट इज रॉन्ग, क्योंकि वहां पर सिर्फ ये लिखा ए इज ऑन ट्रायल, ए इज नॉट ऑन हिज ट्रायल। ओके, सो या गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when one fact is declared conclusive proof of another, which of the following is untrue? ठीक है, यहाँ पे untrue पूछा जा रहा है। it is mandatory presumption, ठीक है, ये तो ट्रू है। इट इज इररिबटेबल प्रिजम्पशन, ये भी ट्रू है। ठीक है, द कोर्ट में एट इट्स डिस्क्रिशन अलाउ द एविडेंस टू रिफ्यूट द प्रिजम्पशन, ये गलत है, बिकॉज कंक्लूसिव प्रूफ में जो है द कोर्ट शैल नॉट अलाउ द एविडेंस टू बी गिवन टू डिसप्रूव द प्रिजम्पशन। ठीक है, वो कंक्लूसिव प्रूफ है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा, a document is transcribed from a copy of another document. After the transcribed copy is prepared, the same is compared with the copy of original document. Under the Indian Evidence Act, the transcription so prepared is neither primary nor secondary. Why? Because हमारे 63 के C में given है that a copy transcribed from a copy but afterwards compared with the original. अब यहाँ पे क्या है, the same is compared with the copy of original. ठीक है, it is not compared with the original, it is compared with the copy of original. तो copy of original क्या हो गया, वो तो खुद ही secondary evidence हो गया। तो अब ये थोड़ी ना secondary evidence होगा, ये जो है it is neither primary nor secondary. Okay, next is which of the following provisions of एविडेंस एक्ट इनकॉर्पोरेट्स द रूल ऑफ रेजिस्ट्री। बहुत इजी क्वेश्चन है और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सेक्शन 6 में गिवन है। ठीक है, with the respect of burden of proof under 104 of Indian Evidence Act, choose the correct response between the two statements given below. ठीक है, the prosecution wishes to prove a dying declaration by Y, the prosecution must prove Y's death. ठीक है, A and B both are correct. क्यों, यहाँ पे सेक्शन 4 में क्या दिया है, burden of proving the fact to be proved to make evidence admissible. यहाँ पर illustration में आपकी ये चीज गिवन है कि A wishes to prove a dying declaration by B, A must prove B's death. ठीक है, which is obvious. अगर किसी की डाइंग डिक्लेरेशन को आपको प्रूव करना है तो ये तो प्रूव करना पड़ेगा ना कि वो मर चुका है। ठीक है, A wishes to prove by secondary evidence the contents of lost document. A must prove that the document has been lost. ठीक है, same goes for the dying declaration. Okay. सो गाइज अब हमारा 2019 का जो पेपर है वो है चूज द ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोपोजिशंस। प्रोपोजिशन क्या है, एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू द मैटर इन इशू, द बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन ऑल केसेस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कैन नॉट बी एडमिटेड। सो इसका करेक्ट आंसर है ए। वाई? बिकॉज फर्स्ट एंड टू तो सही है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कैन नॉट बी एडमिटेड कहाँ से सही हो गया। ठीक है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो हैं उन पे तो केस पूरा बेस हो जाता है कभी कभार। ठीक है, सो चूज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द प्रोपोजिशन। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 is applicable to judicial inquiries. Okay, so this is correct. Indian Evidence Act is strictly inapplicable to quasi judicial inquiry. This is incorrect. Okay, judicial proceedings, the evidence is taken on oath. Obviously judicial proceedings जो है वो oath पे ही होती हैं, सबको पता है। So which of the following is evidence though not covered by definition of evidence under section 3 of Indian Evidence Act? So admission given है, confession given है, judicial notice भी है, लेकिन demeanor जो है वो कहीं भी given नहीं है evidence की definition में। Okay, now which of the following is a question of law as per Evidence Act? Relevancy, admissibility, both of these, none of these. Both of them are question of law. Falsus is in uno, falsus in omnibus. इसका क्या मतलब है? It is a rule of caution, जिसका क्या, which does not apply to Indian law. Why? Because यहाँ पे बोल रहा है कि false in one thing, false in everything. ठीक है, so this does not apply to Indian law. Now next है हमारा choose the true statement about the proposition. क्या है? Section 6 prescribes the rule of relevancy of an evidence which is part of same transaction. ठीक है, ये करेक्ट है हमारा। ठीक है, proximity of time, place, continuity of action are suggestive part of the same transaction. बिल्कुल सही है ये। Psychological acts may also form part of same transaction. बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमारे definition में ही facts के given है कि
साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल बोथ फैक्ट्स आर एडमिसिबल। ओके, तो यहाँ पर बोथ आर रेलिवेंट, सो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। ठीक है, सेक्शन 6 में गिवन है हमारे रेलिवेंसी वाला पार्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज X is prosecuted for the murder of Y. During trial, evidence is adduced that X and Y had a verbal altercation in which accused X had threatened to kill Y. The fact that soon after threatening statement, X had purchased the same knife which was used to stab Y is admissible under section 8. Why? Because 8 states the motive, preparation, previous and subsequent conduct. ठीक है, तो जब उसने बोला कि मैं तुझे मार दूंगा, उसके बाद वो जाकर वो सेम नाइफ लेता है, जिससे पता चलता है कि उसके डेथ जिस नाइफ से हुई इट इज द सेम नाइफ, तो वो क्या हुआ आपका प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट। ठीक है, प्रीवियस कंडक्ट हुआ ना यहाँ पर, तो सेम नाइफ लिया ना उसने बिफोर द डेथ। ओके, सो इट इज रेलिवेंट। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन इट इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 6, बता चुकी हूँ मैं आपको। ठीक है, और इसके साथ कौन सा पढ़ना था हमने, 54A ऑफ CRPC। शाबाश। So our next question is X, Y and Z entered into conspiracy on December 26, 2017. A exploded a bridge in accordance with the conspiracy. The bridge was to be exploded on 26th Jan. ठीक है, और कौन सा 2018. However, Mr. Y was arrested on 24 January. He made statement to the police that about the conspiracy. However, remaining two conspirators successfully executed the conspiracy. Later on, the remaining two conspirators were also arrested and all were charged with various provisions of IPC. During the trial, prosecution reasonably established the fact of conspiracy between X and Y and Z to explode the said bridge. In this reference, which of the following fact is relevant under section 10? ठीक है, A letter written by X to Y on December 20, ठीक है 2017, कब प्लान बना था इनका, December 26, तो इसको तो कैंसिल ही कर दो बिकॉज दिस इज इररिलेवेंट, क्योंकि वो पहले हुआ है। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी से इंक्वायरिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ मीटिंग, सो दिस डज नॉट रिलेट टू द क्राइम। ठीक है, सो कैंसिल दिस। Confession made of Y to the police officer on 24th of क्या कहते हैं अपना 218, ठीक है 2018, तो उसका क्या है, वो भी कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर इज इररेलेवेंट। हम सबको पता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन देने की। ठीक है, सी क्या है, कन्फेशन मेड टू ऑफ जेड टू द पुलिस ऑफिसर ऑन 30, वो भी उसकी भी कोई रेलेवेंसी नहीं है, क्लियरली लिखा है ना कि कन्फेशन टू द पुलिस इज नॉट एडमिसिबल, तो ये दोनों तो हो गए ना कैंसिल। फिर तो डी बचा है अब हमारे पास, एन ईमेल सेंट बाय वाई डेटेड January 16, 2018 to the supplier of explosive. Only this is admissible. Okay, because this was during the conspiracy. Now choose the true statement about proposition. Proposition क्या है हमारी, Section 11 of Indian Evidence Act provides residuary clause for relevancy of facts. ठीक है, 11 क्या है, based on general theory of relevancy. थर्ड क्या बोल रहा है, Section 11 is independent one and not controlled by other provisions of Evidence Act. So इसका correct answer है that 1 and 2 are correct. Third is incorrect because it is controlled by other provisions. अब देखो plea of alibi जो है वो आप ले लो, ठीक है, लेकिन उसके साथ दूसरे जो आपको सेक्शंस हैं वो भी तो अप्लाई होंगे ना। Res geste is not just made of one section, it comprises of a lot of sections. ठीक है, रेस जेस्टे का जो इंट्रोडक्शन है दैट इज इन सेक्शन 6, बट जो हमारा सेक्शन 6, 7, 8, ठीक है 9, 14, ठीक है, ये सारे के सारे आर पार्ट ऑफ रेस जेस्टे। और यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि वेदर सेक्शन 11 is independent one, no it is not independent and not controlled by other provisions of एविडेंस एक्ट जो यहाँ पर लिखा है, इट इज रॉन्ग, इट इज कंट्रोल्ड बाय, क्योंकि और भी चीजें तो देखनी है ना जब केस देखते हैं। इट इज यू कैन नॉट you cannot base a sole judgment on just one thing, है ना।
Now हमारा next question is X is tried for committing murder of Y by intentionally shooting at him. With reference of his intention, prosecution adduced the fact that X had attempted to shoot Y at an earlier occasion. The fact is relevant under section 14 of Indian Evidence Act. ठीक है, सेक्शन 14 क्या बोलता है हमारा? सेक्शन 14 जो है इट टॉक्स अबाउट फैक्ट्स शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी और बॉडीली फीलिंग्स. ओके, so now intention is covered under 14. Choose the true statement about the proposition. Judicial confession is substantive piece of evidence. Extrajudicial confession is not substantive piece of evidence. Confession of co-accused is admissible against others as well. ठीक है, ए और 3 तो सही है, 2 क्यों गलत है? Why? Because एक्स्ट्राजुडिशियल कन्फेशन जो है वो भी सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस हो सकता है. ठीक है, नाउ moving on to next question, which is in which of the following judgment Supreme Court ruled that section 27 is an exception of 25 and 26. 24 को भी ऐड करना चाहिए था इनको यहाँ पे. ठीक है, so Inayatullah versus State of Maharashtra is the correct. When a photographer of an original is prepared, when a photograph of original is prepared without being compared, the photograph is secondary evidence. Why? Because हम पढ़ चुके हैं प्राइमरी में comparison important है. ठीक है, in which of the following cases secondary evidence may be given of existence, condition और contents of the documents. ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है all of the above. When the original is shown or appears to be in the possession or power of the person against whom the document is sought to be proved. When the original is shown or appear to be in possession or power of the person out of reach of the court. This is also correct. When the original is shown or appears to be in possession or power of the person not subject to the process of the court. So यहाँ पर all of the above is the answer. Next is X is charged with traveling on a railway without ticket. The burden of proving X had a ticket is on X. ठीक है, and the burden of proof यहाँ पे क्या होगा? Burden must be discharged as preponderance of probability. Why? Because वो जो बंदा है वो डिफेंस में है. ठीक है, और जो प्रोसिक्यूशन है उसके ऊपर होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. ठीक है, सो यहाँ पर जो एक्स है उसके ऊपर मियर प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इनफ टू शो दैट उसके पास टिकट था कि नहीं था. ठीक है, नेक्स्ट इज प्ली ऑफ एलिबाई कैन बी एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 103, जहां पर बात कर रहा है बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट. ठीक है, a judgment given by competent court can create estoppel by record. ठीक है, which of the following provisions of Indian Evidence Act deals with leading? question 141. okay, given है, heading ही वही है. So हमारा 2018 का जो क्वेश्चन है वो है to which of the following provisions of Indian Evidence Act the well known case of Muhammad Sharif versus Bande Ali is related to? So it is related to section 107 and 108. okay, now what out of the following cases which one is not related to confession? MC Varghese versus Poonam. Next is in which case it was held that dying declaration may be made by signs when the injured person is unable to speak? आर अब्दुल्ला. देखो 2018 में कितने केसेस वाले क्वेश्चन आए हैं. ठीक है, आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट which one uses the word no barrister, attorney, pleader or vakil shall at any time be permitted unless with his client express consent to disclose any communication made to him in course and for the purpose of his employment as such barrister, pleader, attorney or vakil by or on behalf of his client, or to state the contents or condition of any document with which he has become acquainted in the course and for the purpose of his professional employment, or to disclose any advice given by him to his client in the course and
for the purpose of such employment. So इसका correct answer है 126 and 127. Why? Because 126 deals with professional communication and 127 deals with section 126 to apply to interpreters also, etc. ठीक है. Next is Bill of Evidence Act was prepared by James Stephen, Sir James Stephen. ठीक है. Which provision of Indian Evidence Act makes space for the application of the principle res judicata? It is section 40. Why? Because section 40 जो है it deals with previous judgments relevant to bar the second suit. Conclusive है ये, ठीक है, conclusive है ये, conclusive proof वाला है ये section. Now हमारा जो next है हमारा section 35, question 35, it is saying that I'm sorry guys, जो 40 है it does not talk about section जो 40 हमारा, it does not talk about conclusive proof, it was section 41. okay, by mistake बोल दिया मैंने. So जो हमारा and जो हमारा section 40 है deals with previous judgment relevant वाला जो bar to the second suit, उसमें क्या है, it is judgment in personam and इसको हम section 11 of CPC 20 clause 3 of constitution यानी डबल jeopardy के साथ पढ़ेंगे और 300 of CRPC के साथ पढ़ेंगे. ठीक है, जो section 40 था हमारा पीछे वाला. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट a witness under examination can, while under examination, refresh his memory by referring to any writing made by himself at the time of transaction concerning which he is questioned. Section 159 में given है. ठीक है, 159 में क्या given है हमारा, 159 talks about refreshing of the memory. okay, which significant principle of law was declared by Supreme Court of India in the case of Pawan Kumar versus State of Haryana? क्या था, presumption as to abatement of suicide by married women. ठीक है, 113A के साथ पढ़ेंगे इसको. As per which provisions of Evidence Act, secondary evidence may be given of the content of the document when the original is of such a nature as not to be easily movable. Section 65 clause D. ठीक है. Which of the following section under Indian Evidence Act was amended by Criminal Law Amendment Act 2006? It was 154. Questions by party to his own witness. The previous conviction of a person is relevant under Evidence Act under section 14, explanation 2. A witness cannot be converted into an accused. ठीक है, person though may be compelled to answer question relating to offense under section of which section of Indian Evidence Act? So यहाँ पर correct answer है under section 132. 132 क्या बोलता है, 132 talks about witnesses, witness not excused from answering on ground that answer will criminate. ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग बाकी सारे सेक्शंस 148, 131, 163 कैसे डील करते हैं मैंने स्क्रीन पे लिखा है, तो आप पढ़ लो उसको एक बार. ठीक है, सो दैट आपका रिवाइज हो जाए. In which of the following cases Supreme Court of India observed that even a student may be treated as an expert under 45? कानपुर यूनिवर्सिटी वर्सेस समीर गुप्ता. ठीक है, evidence under Evidence Act means and includes both ocular and documentary evidence. Proof of fact for purpose of evidence depends on probability of its existence. ठीक है, choose the correct assertion based on the following proposition. Statement is a genus, admission is a species. ठीक है, while confession is a subspecies. So this is correct. Statement and admission are species ये गलत है, statement and admission are genus ये भी गलत है. First is correct, बाकी दो गलत हैं. ठीक है, now next question है हमारा declaration by a person not able to be called as witness in the course of business is admissible under 32(2). ठीक है, 1, 2, 4 और 7 में क्या गिवन है साइड में लिखा, आप पढ़ लो. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओमनिया प्रेजेमेंटर राइट एसे एक्टा. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ऑल एक्ट्स आर प्रिज्यूम्ड टू बी राइटली डन. ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है
Electronic records in proper custody gives rise to a presumption as to digital signature to be fixed by the particular person under Section 90A of Evidence Act if the electronic record produced is 5-year-old. ठीक है. Oral evidence of the fact invalidating a document is admissible. कौन से में? Proviso 1 Section 92. ठीक है. Next है doctrine of estoppel is a rule of evidence. Next question है which of the following description is correct under 145 of Indian Evidence Act? तो इसका आंसर है B. A witness, जो कि पूरा का पूरा सेक्शन as it is कॉपी किया हुआ है, तो this is the correct answer, B वाला. A witness may be cross-examined as to the proviso, previous statements made by him in writing or reduced into writing and relevant to matters in question without such writing being shown to him or being provided, but if it is intended to contradict him by writing, his attention must, before the writing can be proved, be called to those parts of it which are to be used for the purpose of contradicting him. Okay. Next is a co-defendant in a case can be cross-examined by another co-defendant when their interests are adverse to each other. ठीक है, तभी cross-examine करेंगे ना एक दूसरे को co-defendant, अगर उनके इंटरेस्ट जो है वो एक दूसरे से अलग हो गए, आइडेंटिकल होंगे थोड़ी ना होगा तब. ठीक है. नेक्स्ट है in which of the following cases Supreme Court of India held that the rule of prudence required that the evidence of an accomplice should ordinarily be corroborated by some other evidence. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है फ्रांसिस स्टैनली वर्सेस इंटेलिजेंस ऑफिसर. और अकम्प्लिस वाला कहाँ दिया गया है हमें? सेक्शन 133 में हमें अकम्प्लिस के बारे में बताया गया है. ठीक है. नेक्स्ट है एज रिगार्ड्स क्वेश्चन by a party to its own witness under 154 of the Evidence Act, which of the following proposition expression is correct? So B is correct. The person who calls a witness is entitled to put any questions to him which might be put in cross examination by the adverse party. ठीक है. So this is the correct answer. Next is the test identification parade is only an aid to investigation. The practice is not born out of prudence was held by the Supreme Court in Siddharth Vashisht alias Manu Sharma versus State Entity of Delhi. ये वही है हमारा कौन सा वाला है हमारा? This is जसिका लाल वाला केस. ठीक है. So under section 1 of Indian Evidence Act, the proceedings which are specifically excluded from operation of an Evidence Act is proceedings before the arbitrators. ठीक है, given है ना हमें section 1 में. When one fact is declared by the Indian Evidence Act to be conclusive proof of another, the court on proof of one fact shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it. Why? Because it is conclusive proof. Next is which illustration of 114 of, देखिए 114 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी सारी इलस्ट्रेशन याद करके जाओ. ठीक है. The Indian Evidence Act is based upon the maxim, कौन से वाला? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसका क्या मतलब है? All the things are presumed to have been rightly done. ठीक है. कहाँ दिया ये इलस्ट्रेशन? ई में. Section 93 of Indian Evidence Act applies to ambiguous patent, यानी कि पेटेंट एम्बिग्विटी. ठीक है, यहाँ पर 93 बात करता है पेटेंट की, और लेटेंट की कहाँ बात करी गई है बताओ मुझे? आजू बाजू वाला ही सेक्शन है, चेक करके. सो लेटेंट जो हमारी एम्बिग्विटी उसकी बात करी गई है सेक्शन 95 में. ओके. नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 31 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट सेज दैट एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ of the matters admitted, but they may operate as estoppels. ठीक है. Out of the following, which is not a secondary evidence? Oral account of copy compared with the original. ठीक है. What is not correct for the admissibility of dying declaration under 32(1)? It is not necessary that the cause of death must be in question. ठीक है. Which is not a public document? Record of tribunal, record of municipal board, memorandum of association of the company, none of the above. None of the above is the correct answer. ठीक है.
A disputed handwriting can be proved by calling an expert. ये correct है. Examining a person acquainted with the handwriting of the writer. This is also correct. Comparison of the two admitted. Yes, this is also correct. So all of the above is the correct answer. The deposition relevant under 33 of Evidence Act but is subject to control of 158. ठीक है, 158 क्या बोलते हैं, सारे sections क्या बोलते हैं, अब देखो साइड लिखा है मैंने. Next is a person who has taken solemn promise of silence gives evidence in writing in open court. His evidence shall be deemed to be oral evidence. Okay. A professional communication between an advocate and his client can be disclosed before the court. कहाँ पर? With the consent of the client. This is also true. Without the consent of the client, if it is made in furtherance of any illegal purpose, this is also true. Without the consent of the client, if the advocate comes to know that any crime or fraud has been committed since the commencement of his employment, yes, this is also true. So once you hire an advocate और उसके बाद अगर आप कोई क्राइम करते हो तो एडवोकेट जो है अगर उसको पता चल जाता है इस बारे में तो वो कोर्ट में जाके बता सकता है. ठीक है, तो ये नहीं सोचना कि नहीं बता सकता है या प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस में आता है. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is the presumption under 112 of Evidence Act is relevant when there is dispute relating to paternity of the child. ठीक है, maternity of the child तो कभी dispute हो ही नहीं सकती. How can it be disputed? है ना, बच्चा तो माँ ही पैदा करती है. So birth during marriage जो है conclusive proof of legitimacy. यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है कि mother is तो obviously mother तो mother ही है, but the father, the paternity of the child is considered as conclusive proof. ठीक है. Burden of proof under 101 of Indian Evidence Act never shifts. ठीक है, it is always on the prosecution. Now 102 में shift होता है. ठीक है. Which of the following is not correct statement about expert opinion? The opinion of the expert is rarely conclusive. The facts which are irrelevant become relevant when they support the opinion of the expert. Opinion of expert is binding on the judge always. So this is incorrect. ठीक है, nothing is binding on judge. Judge जो है वो खुद decide करता है हर चीज. A witness cannot refresh his memory by referring to another witness for taking his assistance. ठीक है. Next question is in relation to expressions defined in section 3 of Indian Evidence Act, which of the following statement is not correct? देखो not correct वाले कितने सारे questions हो चुके हैं अभी तक. Facts includes any mental condition of which any person is conscious. ये तो correct है. ठीक है. Courts include arbitrators. बिल्कुल गलत, ये है ही नहीं. ठीक है. So this is wrong. Next question is for proving execution of a registered will, it is necessary to call at least one attesting witness. कहाँ पर given है ये? 68 में given है. ठीक है. Next is secondary evidence of the contents of the document is not admissible when the original is of nature as not too easily movable. The original has been lost. The original is a public document. ये सभी सही हैं. The original has been found to be inadmissible. ये तो हो ही नहीं सकता ना. फिर admissible कैसे होगा? So this is wrong. ठीक है. Which of the following is not correct statement? No confession which is procured by promise is relevant. No confession made by the accused to the police officer, whether during custody or out of custody, is irrelevant. A confession made by accused voluntarily to any person other than a police officer while he was not in police custody can be proved. A confession made by an accused to the police officer in presence of a magistrate is relevant. So this is not correct. So our next question है, a document containing a communication from a husband to his wife in the hands of third person is admissible in evidence. Okay, सिर्फ husband wife के बीच में नहीं होता, third person सुन ले तो वो कुछ नहीं है. ठीक है. Documents in respect of privilege has been provided under section 123 of Indian Evidence Act as is an unpublished official record. ठीक है.
The relationship is in section 50 of the Indian Evidence Act means relationship by blood, marriage और adoption, तीनों, ठीक है. Opinion of relationship की बात हो रही है. Mistake referred to in proviso 1 of 92. देखो 92 सेक्शन कितनी बार पूछा जा चुका है, रेपिटेशन है यहाँ पर. Is unilateral and mutual mistake, ठीक है, दोनों. Section 105 of Indian Evidence Act applies to criminal trials. Any person in section 106 of the Indian Evidence Act refers to party to the suit. The presumption under 41 क्या है? Conclusive proof, ठीक है, is irrebuttable presumption of law. The presumption under 90 of Indian Evidence Act can be drawn in respect of original documents, ठीक है. क्यों? वो presumption as to documents 30 years old की बात कर रहा है. Under 145 of Indian Evidence Act, a witness may be contradicted as to his previous statement in writing after drawing his attention to the previous writing, ठीक है. 91 जो है applies to both. क्या क्या? Only to the transaction which under law must be in writing, only to the transaction which are reduced into writing, ठीक है. Queen Empress versus Abdullah जो है, it is related to the which of the following section? 8, ठीक है. कंडक्ट की बात कर रहा है यहाँ. क्यों? क्योंकि a girl was fatally attacked and was unable to speak after her throat was cut. She identified the attacker Abdullah by making gestures, ठीक है, in response to the question. So conduct is यहाँ पर relevant. Section 81A was added in the Indian Evidence Act by IT Act to provide presumption as to gazette in electronic form. The Indian Evidence Act applies to affidavits, no. Departmental proceeding, no. Arbitration, no. And inquiry to determine jury relation between the person. Which of the section of Indian Evidence Act is substituted for the old section of IT Act 2000? क्या है? 39, ठीक है. 39 deals with what evidence to be given when the statement forms part of conversation, document, electronic record, book or series of letters, papers, ठीक है. Next है which of the following section of Indian Evidence Act deals with only civil cases? It is 23. What is not correct regarding admissions? Admissions may be documentary. All confessions are admissions, but all admissions are not confessions. Admissions relating to the civil transaction only. Admissions may be proved against representative in interest of the maker. So इसका correct answer है C. Case of Buddha Sen versus State of UP is related to identification पर, ठीक है. What is correct in reference to dying declaration? It is a weaker kind of evidence, no. It cannot form basis of conviction, no. It stands on the same footing as other type of evidence, yeah, this is correct. It is verbal statement only, no, not important. Written भी हो सकता है. Which of the following is not exception to the rule of against hearsay? Admission, entries to public record, statement contained in public documents, none of the above. So none of the above is the answer. 114 again repetition है ना. Presumption of facts जो है इसका आंसर है. Next question है हमारा. Section 108 of Indian Evidence Act provides presumption for death, ठीक है. A dumb witness who gives his evidence by writing in open court is oral evidence. Section 13 of Indian Evidence Act applies to public and private rights. Next है, in case of State of Bombay versus Kati Kallu, the Supreme Court judged the validity of Section 73 of Indian Evidence Act. In which case it was held that identification parade do not contravene Article 20 Clause 3. बताया था ना 20 Clause 3 कौन सा था? It is self incrimination वाला, ठीक है. प्यारेलाल versus the state. Next is which double jeopardy वाला था ना 20 Clause 3. Yeah. So by which amendment Section 13A was inserted? हमारा Criminal Amendment Act 1983 और 13B था 1986 से. Last questions. Under Section 45 of Indian Evidence Act, the opinion of the expert cannot be of question in Indian law. Obviously, foreign law का पूछेंगे, art science का पूछेंगे, Indian law का क्यों पूछेंगे? वो तो खुद जज है ना. Under Section 44 of the
Indian Evidence Act, evidence of judgment, order or decree can be challenged on the ground of fraud or collusion or incompetency of the court. Okay, so this is the correct answer. So guys, that's all for today. हम इंडियन एविडेंस एक्ट के सारे PYQs कर चुके हैं जो हिमाचल जुडिशरी में आए हैं. आप लोगों को इन सभी PYQs की जो PDF है वो आपको मेरे YouTube डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का नाम लिखा है वहां पर मिल जाएंगी. So go and check those PDFs also. If you have any doubt, kindly come back to me. Kindly like, share and subscribe to my channel. I am making these videos ताकि आप लोगों को PYQs जो है वो easily accessible हों. So all the best for Himachal Pradesh Judiciary and see you in the next video.